who we give subsidized patients. जो बच्चे हैं और जो women हैं उनके लिए हमारे पास स्पेशल फंड है. So woman और child को तो almost everyone is free. और जो women हैं उसमें अगर वो किसी भी कारण से वो इलाज नहीं कर पाते हैं तो उनको हम सब में कन्वर्ट कर देते हैं फ्री कैटेगरी में. और हम women and children का अपने सारे टाटा मेमोरियल सेंटर में, मैं सिर्फ मुंबई की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी हमारे अस्पताल हैं उसमें सब में women and children के लिए स्पेशल फंड्स हैं हमारे पास. और उसके लिए हम गवर्नमेंट के शुक्रगुजार हैं. And we give treatment to all of them. So no woman and child can ever be deprived of treatment for the want of money. Similarly, कोई भी अन्य पेशेंट अगर उसको पैसे की जरूरत है तो हमारे पास मेडिकल सोशल वर्कर होता है and वो उनको हेल्प करता है. And we have lots of donors who are able to support us. So any question that you have from any of us on any of the things that have been said so far? Cancer cannot be won in the hospital because we are seeing only the patients who are coming here. Patients who are susceptible, patients who have certain lifestyle, patients who have certain sign and symptoms which can be utilized for early detection. वहाँ पे अगर community level पे, and community level means that हम awareness program करते हैं, early detection program करते हैं, कुछ molecular epidemiology मतलब कौन लोगों को कैंसर होने की ज्यादा संभावना है उसके रिसर्च करते हैं. जैसे हमने वायरस से एक रिसर्च किया और पता किया कि एक ऐसी जीन है जिसके गड़बड़ी के चलते गॉल ब्लैडर कैंसर होता है जो कि वहाँ बहुत कॉमन है. तो ये जो चीजें होती हैं कैंसर के बर्डन को कम करने के लिए और कैंसर का अर्ली डिटेक्शन के लिए, उसमें कम्युनिटी के साथ भी काम करना और स्टेट गवर्नमेंट के साथ काम करना, एनजीओ के साथ काम करना, वो भी हम करते हैं. So what is happening at this moment at Center for Cancer Immunology? So उसके लिए मैं एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा क्योंकि उसमें 1 घंटा आ जाएगा. And actually, yes, you are right that we will have another for research and for epidemiology. The reason is that एक ही में सब हो जाने से ना, you will also be not comfortable. So Center for Cancer Epidemiology is a 1 full day workshop because many of you would like to take up public health as your तुम लोग भी रिसर्च करते हो, आप लोग भी जो है बहुत सारा करते हैं. So I would suggest that we will take you to the CCE, you sit there, understand what is going on there, in addition to the press conference and the brief that we will have. But the bottom line is early detection, awareness and risk prediction models. Just one other thing, Doctor. The hotbeds, how many patients have been treated so far? Archie? Hi. So, this isolation beds that we are talking of, this is basically for treating patients who are treated with radionuclide therapies. And mainly when we are treating patients of cancer thyroid, after the surgery is done, we need to eradicate all the cancer cells that are present. So for that, we treat them with radioactive iodine. And to treat the patients with radioactive iodine, they need to be admitted in this isolation therapy ward. So we started this on April 22nd last year. So since then, we have treated around 300 or more than 300 patients till December. So January, February, we are still continuing. So about 350 to 400 patients since April last year. So actually, I think you need to give the full numbers with lutetium and others. So, the total number I think is more than how many? About 250. Approximately. So, what I spoke of is for radioactive iodine, but if we want to treat prostate cancer, we want to treat neuroendocrine, we have other radioisotopes, that is lutetium-based PSMA or lutetium-based DOTA therapies, for which we treat these patients. So apart from treating patients of cancer thyroid, we also treat prostate cancer, neuroendocrine cancers, medullary cancer thyroids, and the numbers are endless of what we treat. So last year we have treated, the numbers that I have is till December. So we have treated radioactive iodine, I think the total number is 250 only till December, because we started it very late.
from April we started treating radioactive iodine, and only in November, December did we start the lutetium therapies and other therapies. So at present it is 250 patients last year, and we are continuing. So it's about 350 to 400 patients that we have treated till date. So this is a recently commissioned building, and we were waiting for some of the equipment to come in. So now we have got the equipments which are required even after treatment. बिल्डिंग्स हैं और दो जो हमारी फैसिलिटीज हैं, ये सिर्फ कैंसर के लिए नहीं होती हैं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसका कैंसर से कोई संबंध नहीं भी है, फिर भी हम उसमें कर सकते हैं. और अगर आप देखोगे, एंड शी विल टेल यू इन मोर डिटेल्स दैट ये पूरे मेरे ख्याल से अगर आप देखेंगे बॉम्बे, महाराष्ट्र और मे बी साउथ इंडिया, दिस इज अ वेरी लार्ज फैसिलिटी which has scale of absorbing many of the diagnostic tests which is not being done outside in any part of Mumbai, and let it be between the whole Maharashtra or Gujarat put together. So wo jo Muga, Thariam, all those scans that you do, interventional radiology is one such facility. जैसे कि he will explain to you that जो हमारे पास दो बाईप्लेन DSA है, and बाईप्लेन DSA किसी अस्पताल में एक होना भी बहुत मुश्किल होता है. They have उसकी utility in non-cancer also is massive. So we are not only catering to cancer patients, but those patients जिनको कि हम बहुत affordable way में अपने अस्पताल में बुला के उनको इलाज के लिए या उनकी diagnosis के लिए help कर पाएंगे. So maybe quickly you can tell about the benign work that you do. Okay, About to commission a very powerful supercomputer, and that is called the High Performance Computing Facility. It will be inaugurated perhaps in February this year. It's already complete, and we will be able to tackle questions involving high throughput genomics, proteomics, protein modeling, as well as artificial intelligence involving both images as well as high throughput data in this high performance computing facility. And I think some of my colleagues, if they are present there, Dr. Prateek Chandrani, Swapnil Rane, they may be able to tell you about it further. And the last unique thing, not last, there are two more unique things. So the next unique thing about ACTREC is that it is going to have a very large cellular GMP facility to create cell-based immune treatments for cancer. So some of you have heard about the CAR T-cell therapy. It was pioneered by IIT Bombay in collaboration with Tata Memorial Center, both ACTREC and TMH. And now we already have a small lab that works on CAR T and other cellular therapies within the CRI in ACTREC. But we are creating a full facility over spread over 10,000 square foot, 2 floors of the archival building, and that also is under works. And the last thing is that we don't only have outpatient departments and operation theaters and beds for patients, but we also have living facilities, accommodation facilities for our patients. So we have what is called the Asha Nivas, which was generously donated to ACTREC by the Infosys Foundation, and it is a very nice facility. So if you all have the time, you can please go and visit there. And you can see that it has single rooms, it has facilities for housing almost 300 patients with a relative. Very nicely done rooms. We are very grateful to the Infosys Foundation. And patients can not only come for treatment, but they get to live there for the duration of their treatment. And similarly, we have for pediatric patients, we already have a St. Jude's Children's Cancer Center where children patients and their parents can come and live, but now St. Jude's has created, which we will also commission very shortly, a big 11-floor building that has the housing facilities for children patients. And so along with the India's almost largest blood cancer and pediatric cancer treatment center, the Sandeep block, which is coming up in ACTREC, so the children will get to live there while they receive their treatment. The next unique thing about ACTREC is that I just said that there is another CSR project which will create a very large, almost 350 bed center only for treatment of
blood cancer patients and children cancer patients. And that's a huge building. It is the largest clinical building. It will be commissioned in about 1 to 1.5 years. The civil construction is more or less complete. And the last thing I will stop and hand over to my colleagues in ACTREC. So most of us know that cancer hospitals primarily work within the premises of the hospitals. So patients come to the OPD, inpatients, operation theatre, daycare, so on and so forth, and some research is conducted in the laboratories. How to know that cancer actually happens in the community? It happens in towns, it happens in villages, cities, etc. and so on. So we have a unique Center for Cancer Epidemiology which is within the premises of ACTREC, and here that is led by its own director, Dr. Rajesh Dikshit, and here we conduct research and studies into the causes of cancer in the Indian population within the community. Within rural community, a large cohort in a rural area called Barshi, about 200 kilometers from Mumbai. Case control studies, preventive oncology, screening, and very importantly, population-based cancer registries in about 16 or 17 locations in India. So ACTREC does not only exist within ACTREC, ACTREC has a wide remit all over India. It is assisting all the other units of Tata Memorial Center to have similar outreach and epidemiological activity with respect to screening, registration, etc. So ACTREC is truly, in the true sense of the word, a comprehensive cancer center with a very, very wide remit. And I will say that I am very, very proud of ACTREC, as Dr. Pankaj Chaturvedi mentioned. जितना है वो हम खुद खर्चा करेंगे, कहीं न कहीं से उसका जुगाड़ कर लेंगे। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, CGHS है, ECHS है, तो हम सारों को करते हैं। तो जो महात्मा फुले में आ गए, उनको अगर नहीं भी कवर होते हैं वहां पे, तो हम कर देते हैं। तो रोबोटिक सर्जरी के बारे में सुधीर, और एंड मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। Actually, we have done more than 100 robotic surgery. Last 4 months, we got the robot in 4 months time. More than 100 robotic surgery अभी किया है, और we are expanding the robotic procedures. One more robot is coming, so we'll be doing more robotic surgeries. The advantage of robotic surgery is that we can go to places where it is difficult to directly go and operate with fingers. So robot का finer adjustment कर सकते हैं, clearer view मिलता है. So with this, I think we can do robotic and minimally invasive, and we also have a GI surgery. We are expanding the GI surgery. पहले ACTREC में GI surgery इतना expansion नहीं था. We are starting the GI surgery. More complicated. GI माने gastrointestinal surgery, liver, colorectal, and gastric surgery, pancreatic surgery. We are expanding. We have dedicated facility. Another advantage is that we have all the facility. We have experts all over Mumbai. We have experts. The advantage in ACTREC is everything is one umbrella. So in case cancer is a complex treatment, it's not only surgery. It needs multi-modality. Means surgery, radiation, nuclear medicine, intervention. Everything is one under umbrella. And good thing is we all discuss all these things together. So best treatment possible for the patient we choose. Not just a patient coming to a surgeon going for surgery. We discuss, joint clinic hai, sub specialist hai, or they will discuss together and decide the best treatment for the patient. So that's the advantage of working in patient coming to ACTREC. So instead of going to a surgeon just getting surgery, instead of going to a radiation oncologist getting radiation, here what is best for as per evidence we decide. If it is not good for interventional radiology, we send the patient for interventional radiology. If the patient is better managed by surgery, we operate by surgery. That is the advantage of patient coming to Tata Memorial Center, and especially in ACTREC, we have an expanded facility. So more easily available, patients can get better treatment in faster way. That is the advantage. ब्रेस्ट कैंसर है और लास्ट ईयर हम लोग ने 1000 से ज्यादा पेशेंट्स को ऑपरेट किया था यहाँ पे। ये जो कैंसर है इसके लिए हम लोग ने जो सर्जरी हमारी टीम करती है उसमें खाली पूरा ब्रेस्ट निकालना यही ट्रीटमेंट नहीं है।
काफी सारे प्लास्टिक सर्जिकल प्रोसीजर्स में इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं और ये सब हम लोग यहाँ पे करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर पेरिफेरी में भी अपने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में या तो पेरिफेरल मेडिकल फैसिलिटीज में जो प्रेजेंट होते हैं उनको हमारे कलीग्स काफी अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, लेकिन ये जो उसका जो बहुत जो अवेलेबल है ऑप्शंस उनको उसके लिए हेल्प करने के लिए हम लोग ने CME भी चालू, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन इवेंट्स भी चालू किए हैं। उस तरह से एक मेडिकल एजुकेशन इवेंट अभी हो गई रिसेंटली और उसमें काफी अटेंडेंस ऑलमोस्ट 80-90 सर्जन्स हैड अटेंडेड। लास्ट ईयर हम लोग ने एक स्पेशलिस्ट सर्जन्स के लिए और स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग जिनको चाहिए उनके लिए एक प्रिसेप्टरशिप प्रोग्राम भी किया था प्लास्टिक सर्जन्स के साथ कोलैबोरेट करके और वो भी काफी सक्सेसफुल रहा। उसमें से एक कैंडिडेट हमारे साथ ज्वाइन भी किया है उन्होंने एज अ ऑब्जर्वर। तो काफी सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं और ब्रेस्ट एज अ स्पेशलिटी यहाँ पे हम लोग डेवलप कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर पंकज, डॉक्टर नवीन काफी फॉरवर्ड थिंकिंग है और उनका जो सपोर्ट है हमारे लिए ब्रेस्ट सर्विसेज के लिए, यहाँ पे हम लोग डेफिनेटली एक्सेलेंस अचीव करेंगे। TMC से भी हमारा सपोर्ट है, तो हमारा दोनों साइड पे ब्रेस्ट सर्जरी जो है हम लोग कोलैबोरेशन करते हैं और काफी केसेस वहां से यहाँ आते हैं, काफी केसेस यहाँ से वहां भी जाते हैं। तो ब्रेस्ट सर्जरी डिपार्टमेंट इज अ डेवलपिंग डिपार्टमेंट एंड यू विल हियर अ लॉट फ्रॉम अस इन फ्यूचर। CME इवेंट्स भी काफी हो गए यहाँ पे, प्रिसेप्टरशिप इवेंट्स भी काफी हो गए यहाँ पे। So, क्या बताएंगे एक्ट्रेक्ट में जो क्लिनिकली फैसिलिटीज है? हाँ सर बताइए। एक्ट्रेक एक यूनिट है टाटा मेमोरियल सेंटर का जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर है। ये शुरू हुआ था 2001-2002 में, जब एक रिसर्च सेंटर जो परेल में था वो यहाँ शिफ्ट हुआ था, जिसको हम कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, और एक छोटा सा हॉस्पिटल था बिल्डिंग जिसमें 50 बेड्स थे और उसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी का ट्रीटमेंट होता था। लेकिन अब ये 20 साल में और ये 5 साल के जो 5 साल गए हैं उसमें एक्ट्रेक एक काफी बड़ा हॉस्पिटल बन गया है और इसमें 500 बेड्स हैं जिसमें हर प्रकार का कैंसर ट्रीटमेंट होता है। और ये एक्सपेंशन जो हुआ है, इस एक्सपेंशन से हम करीब 7,000 से 10,000 मेजर कैंसर सर्जरीज कर रहे हैं हर साल। हम कम से कम 30 से 40,000 मरीजों को कीमोथेरेपी दे रहे हैं और कम से कम 1,500 मरीजों को रेडिएशन दे रहे हैं। लेकिन अभी ये नेक्स्ट 2 से 3 साल में एक हमारा रेडियोथेरेपी ब्लॉक बन रहा है जिससे कम से कम हम 7,500 से 8,000 मरीजों का रेडिएशन भी दे पाएंगे। और ये फैसिलिटीज जो एक्सपैंड हो रही हैं, इसमें एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसको हम न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी कहते हैं, जिसमें रेडियो आइसोटोप्स को हम प्रोटीन्स के साथ बाइंड करते हैं और वो प्रोटीन जो होती हैं वो रेडियो आइसोटोप के साथ स्पेसिफिक कैंसर सेल्स को अटैक करती हैं जब वो बॉडी के अंदर जाती हैं। इससे क्या होता है कि जो कैंसर सेल है वो ही मरता है और जो सराउंडिंग टिश्यू है, जो नॉर्मल टिश्यू है, वो स्पेयर हो जाती है ताकि कॉम्प्लिकेशंस जो नॉर्मल टिश्यू की है वो नहीं होए। तो ये न्यूक्लियर मेडिसिन फैसिलिटी हाल ही में कमीशन हुई है 2024 मई जून में और हमारी उम्मीद है और हम कॉन्फिडेंट है कि ये नेक्स्ट 5 इयर्स में इस रेडियो आइसोटोप बेस्ड ट्रीटमेंट से हम काफी मरीजों का इलाज कर पाएंगे जिनसे उनको अपनी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। तो जिनको फाइनेंशियल की वजह से ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है उनको आप कैसे मदद करेंगे? तो कोई भी मरीज यहाँ आता है तो उसके लिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर उनकी पास फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, हमारे बहुत सारे NGOs हैं और डोनर्स हैं जो हमें डोनेट करते हैं। तो करीबन बच्चों के कैंसर में तो नियरली
80 to 90% जो मरीज आते हैं उनको नियरली फ्री ट्रीटमेंट ही होता है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओज उसके लिए बच्चों के कैंसर ट्रीटमेंट के लिए डोनेट करते हैं। जो अडल्ट कैंसर्स हैं उसमें भी हमें काफ़ी मदद मिलती है बहुत सारे एनजीओ से, जिससे हमें हेल्प मिलती है। और जो योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री की जो योजना है और जो स्टेट योजनाज है, उनसे भी बहुत सारे मरीजों को ट्रीटमेंट फ्री मिलता है। और एक विमेन एंड चिल्ड्रन फंड है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उससे भी जो हमारे विमेन है और जो हमारे बच्चे हैं उनके जो ट्रीटमेंट होता है नियरली फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। सर नॉन कैंसर ट्रीटमेंट के बारे में भी आपने बताया था। तो नॉन कैंसर क्या होता है कि हमारे जो मरीज होते हैं, हम एक कैंसर सेंटर है तो हम कैंसर का इलाज कर सकते हैं, लेकिन हमारे मरीज सिर्फ कैंसर के साथ नहीं आते हैं, उनकी और भी प्रॉब्लम्स रहती हैं। किसी को डायबिटीज रहती है, हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, किडनी की प्रॉब्लम रहती है, लंग की प्रॉब्लम रहती है। तो थोड़ा बहुत इलाज तो हम ब्लड प्रेशर, हार्ट का और डायबिटीज का ये कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए रहता है किडनीज का या हार्ट का या लंग का, वो एक स्टैंड अलोन कैंसर सेंटर नहीं कर सकता, और इसके लिए हमें अपने मरीजों को दूसरे हॉस्पिटल भेजना पड़ता है फॉर द नॉन कैंसर ट्रीटमेंट। अभी 3 साल में हम एक फैसिलिटी बना रहे हैं जिसमें जो नॉन कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है हमारे मरीजों का, वो हम फिर अपने ही कैंपस में उसका इलाज कर पाएंगे, उनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो सिर्फ हमारे कैंसर मरीज लोग के लिए होगा।